Good afternoon, everybody. Hi, good afternoon. So let's wait for a few more to join in. So it's waiting. It's 12 o'clock in the afternoon, and our time again to go live on Facebook on some very interesting topic. So thank you. Good afternoon, everybody. Very excited to be back with all of you again. And thank you for all your feedback because all of you keep giving us the topics on which you need to hear, and that is what we actually talk on. So please sharing what topics you would like to hear so that we can actually have our next Facebook Live basis that. So formally, this is Dr. Deepti Verma, and I head nutrition at VLCC Institute. And so today we'll be talking about one of my favorite most topic, which is colors in flavors in fruits and vegetables, that is in the foods. And it is actually very, very important, very significant. It's actually the call for these days, because we are plagued with an environment where we have a lot of cardiovascular diseases and cancer and arthritis and low immunity. So actually, the colors and flavors which are present in fruits and vegetables, so they are the ones, that can actually reverse and even cure these comorbidities or medical problems. So hence, this becomes the need of the hour. And we are actually not these days having a lot of fruits and vegetables. So I'd just like to actually begin with a very lovely quote by Thomas Alva Edison, who says that the doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but will prevent the diseases with nutrients. So it's actually very, very true because all the diseases actually can get cured with just by, the food and by the colors and flavors which are present in fruits and vegetables. So just to give you a little recap, so we definitely have nutrients in the food. That's carbohydrate, fat, proteins, vitamins, and minerals. But other than that, there are colors and flavors which are not nutritive. Okay, so they are not nutrients. They are not carbohydrate, fat, protein, vitamins, and minerals. They are just the colors and the flavors which are there in the natural foods. So these colors and flavors, these are called phytochemicals, and they make a world in themselves in terms of giving us amazing health benefits that we can't even think of. So we are going to talk about those today. And so it is said that, all the cardiovascular disorders like hypertension, fatty heart, fatty liver, triglycerides, a high LDL cholesterol, and a low HDL cholesterol. So all of these can actually get optimized when you have these phytochemicals which are present in the fruits and vegetables. Yeah. So other than this, the immunity boosters are these colors and flavors or phytochemicals, so to speak. Other than that, even problems like osteoarthritis can be actually reversed by this. And hypertension, that's high blood pressure. This has a major role to play when it comes to eating fruits and vegetables. So there's a call that I'm supposed to speak in Hindi, so I'll try and use a little Hindi and English both. So जो colors and flavors होते हैं fruits and vegetables में, these are very very important because इनसे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, like high blood pressure, high triglycerides, high cholesterol, और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे cancer. So actually, what happens is that the kind of environment we live in today's time is full of, it could be radiation. So we are, of course, surrounded by radiations right now. All of us are surrounded by Wi-Fi's in whichever environment we are in. We are surrounded by various electromagnetic radiations. The mobile data, of course, works on all our cell phones. So these are also the invisible radiations.
So all these radiations are surrounding us all the time, you know. So they are penetrating our body. They are definitely altering the cellular structures because they are there with us all 24/7. Other than this, of course, I mean, there are harmful chemicals present in the air as well that we breathe. The water that we drink also has a lot of heavy metals and some kind of harmful chemicals. The food that we eat, would have pesticides, and it would also have the other chemicals which are present, and some carbon footprints that we guys leave behind on a daily basis. So which goes into the soil, and from the soil it permeates up to the plants, the parts of the plants. So actually, and the drugs that we take, the medicines and all that we take in, like painkillers and antibiotics and all that. And plus in the body, we are constantly making a lot of metabolic byproducts as well. So we have an accumulation of toxins. So we can actually name them, as toxins. So we actually are accumulated, saturated with toxins, which may come from outside or which the body also generates. So with all of these, it becomes very important for us to have something that neutralizes these toxins. So the chemicals that neutralizes these toxins are present in the colors and flavors which are present in the natural fruits and vegetables. So they are obviously non-nutritive in nature because they are just the color. But whatever goes to our intestines, whether it's the color or a flavor, get absorbed as such into a circulatory system across the wall of the intestine. और वहां से वो अपना beneficial effects डालना शुरू करते हैं. And all these different colors, like जैसे red color, जो blueberries का blue color होता है, या cherries का red color होता है, जो flavors हैं जैसे garlic का flavor होता है. So all these different colors and flavors, they get absorbed as such and they come into our blood circulatory system. And from the blood, they actually start neutralizing all these free radicals या chemicals जिसको हम बोलते हैं, जिससे हमारी body cleanse होती है. Because normally अगर ये cleansing नहीं होगा, if we are not taking plenty of fruits and vegetables, so इनकी कमी के कारण these free radicals or toxins जो होते हैं blood में, they actually start damaging our normal cells, causing oxidative damage. और हमारी टॉक्सिन्स की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ती जाएगी, जिसके वजह से सेल ऑल्टरेशन होते जाएंगे, एंड वी विल हैव डीजेनरेटिव डिजीजेस. सो व्हेन वी यूज द वर्ड डीजेनरेटिव डिजीजेस, उसका मतलब होता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन सेल्स होते हैं, वो अपना इफेक्ट धीरे धीरे वो खत्म होते जाएंगे. एंड वी विल हैव लॉस ऑफ मेमोरी, हमारा फोकस, हमारा कॉन्सेंट्रेशन, वो सब बहुत कम होता जाएगा. एंड वी विल सी दैट वी विल हैव लॉट्स ऑफ मेंटल इश्यूज इन टर्म्स ऑफ डिमेंशिया, लीड करता है एजिंग के साथ में, एल्जाइमर्स होती है उसकी वजह से. सो ये सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जब हमारा टॉक्सिक लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है. So to actually reverse that, just one of the examples, हमारे body organs भी बहुत ज़्यादा affect होते हैं उनकी वजह से, because the body organs are also made up of cells. So those cells also gets attacked by these free radicals or toxins. So toxins को ही free radicals बोलते हैं. Free radicals इसलिए बोलते हैं because इलेक्ट्रॉन एस्केप हो जाता है टॉक्सिन्स के सेल में, एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. सो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, एस्केप हो जाता है, इसलिए उनको फ्री रेडिकल्स बोला जाता है. बिकॉज और ये जो सेल्स होते हैं ये अब बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं हमारी बॉडी के लिए, और इन्हीं की वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां होती हैं. और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो भी हम अपने जीन्स में डिजीजेस कैरी कर रहे हैं, डेफिनेटली जेनेटिक्स की वजह से जीन्स में हम कैरी करते हैं, अच्छी चीजें भी कैरी करते हैं और बीमारियां भी कैरी करते हैं. So there are certain diseases that we carry in our genes like diabetes, mellitus, और say atherosclerosis या hypothyroidism, या जो भी बीमारियां हम जीन्स में कैरी करते हैं, तो वो जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं, और जीनोम एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं. सो ये जो जीन एक्सप्रेशन होता है, इसकी की होती है एक्चुअली ये फाइटोकेमिकल्स. तो ये ऑन भी हो सकते हैं, ऑफ भी हो सकते हैं. तो अगर वो बैड जीन्स है तो हमको इनको ऑफ करना है, और अगर ये बहुत अच्छे जीन्स है तो हमको ये ऑन करना है. तो ये जो जीन्स में बीमारियां होती हैं, ऑब्वियसली वी नीड टू टर्न द की अराउंड, बिकॉज वी डोंट वांट दीज टू हैपन टू अस एट ऑल. वी डोंट वांट देम टू बी एक्सप्रेस्ड इन आवर लाइफ because they are bad genes, right? So the only way to do is by having plenty of phytochemicals.
they act as keys that is going to turn off the bad gene. So the gene expression also can get altered with the support of these phytochemicals. और ये छोटी छोटी चीजें हम realize ही नहीं करते हैं. जैसे अगर एक दिन में हम, normally it is said that we should have about 400 grams minimum, 400 grams of fruits and vegetables in a day. तो अगर जो, और उनको बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं करना होता है, उनका जो नेचुरल फ्लेवर है और नेचुरल कलर है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, तभी वो हमको अफेक्ट करेंगे बहुत पॉजिटिवली, और तब बहुत इफेक्टिवली आपका फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज हो पाएंगे. तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम फ्लेवर्स को इंटैक्ट रखें अपने खाने में और उनको बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करें, बिकॉज दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग. वी हैव अमेजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल इन द मार्केट्स, बट व्हाट वी डू इज विद द वेजिटेबल्स, आई थिंक वी जस्ट ओवर कुक देम, और उनका नेचुरल फ्लेवर, उनका नेचुरल कलर चला जाता है. सो कुछ कुछ ऐसी सब्जियां हैं, कुछ कुछ ऐसे फ्रूट्स है, देन आई टॉक अबाउट नाउ, विच आर अमेजिंग व्हेन इट टॉक्स अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ देम. सो सबसे पहले आई थिंक इज करेला और बिटर गुड. बहुत पॉपुलर वेजिटेबल है, आई थिंक सारे अडल्ट्स को बहुत अच्छी लगती है, और उनमें बहुत अमेजिंग फाइटोन्यूट्रिएंट्स या फाइटोकेमिकल्स होते हैं. कलर और फ्लेवर आपको पता है करेले का बहुत डिफरेंट होता है, और फ्लेवर तो बहुत ही अलग होता है, उसमें एक बिटरनेस जैसी कोई चीज होती है. सो दैट इज चैरेंटीन, विसिन, पॉलीपेप्टाइड पी. ये तीन फाइटोकेमिकल्स होते हैं करेले में, लेकिन ये नेचुरल कलर और फ्लेवर में होते हैं. अगर आपने करेले का बिटरनेस कम कर दिया है, देन इट विल नॉट अफेक्ट यू पॉजिटिवली, और फिर वो आपके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, यानी कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब भी करेला बनाएं तो हम उसका बिटरनेस को कम नहीं करें. आई मीन लाइक वी डोंट हैव टू, normally what people do is that they keep it in the saline water and then they squeeze the karela, that water out of that karela, so that the bitterness goes down. So some people, they kind of, they scrape off the peel part of karela and then they make the vegetable. Some people scoop the inside of the karela, right? I mean, like, and make a stuffed karela out of it, and they stuff it with like pyaz or something, like something other than what karela should have ideally. तो उसकी वजह से भी of course the bitterness goes down, but you have lost all the properties of that bitter gourd. जिस चीज के लिए आप bitter gourd खाते हैं या करेला खाते हैं, all those properties are gone now because you have reduced the bitterness of that bitter gourd. So it is this, these little things have to be pondered over and practiced every day in life when we make the vegetables. So hence keep that charantine, vicine, and polypeptide P intact by retaining the color and the flavor of the Karela. Let the bitterness be there. Let that typical flavor of that Karela be intact by not overcooking it. So cook it mildly. Of course, we need to soften it when we need to eat it, but not that we spoil it to an extent that it loses all its beneficial properties. Okay, so this is a little bit about Karela. So Karela is amazing. Yeah, I mean, when you talk about this charantine, vicine, and all, so they work wonders when it comes to diabetes management and reversing the blood sugar and reversing the insulin insensitivity. So इसलिए जब हम ये bitterness लेंगे, we will see that insulin insensitivity धीरे धीरे control में आती जाती है. And charantine and vicine, they act amazing and they start lowering your blood sugar levels. So this is the benefit of the bitter gourd. Then I think the second food, very important, we can take is the green tea. So, well, the world thinks that when you have green tea, you're going to become thinner. So it is not just that. This is not just the benefit of having green tea. So the chemical compound or the phytochemical which is present in that flavor of the green tea is known as catechins. The longer name of this is epigallocatechins gallate, but you don't have to remember the entire name because it is too long and complex. It just catechins which is there, which is the miracle of the green tea. But the way you make green tea is also very important. Don't over soak your tea bag in the green tea. You should barely tinge it with the pale yellow or the pale greenish color. Don't dip it for a very long time. Okay, so this is the mantra to actually have all the beneficial powers of the green tea. Green tea does have caffeine also, but it has caffeine in a very minimal amount, just about 30 to 50 milligrams, not more than that, which is like pretty low, okay, compared to the coffee and the normal tea that we have.
So it's very important, firstly, that how you prepare your green tea, because we don't want to give you caffeine when we give you green tea. We want to give you the catechins when we give you the green tea. So catechins has numerous roles to perform. Green tea also has polyphenols, catechins. So all that gives you not just weight loss. So weight loss का जो reason होता है कि green tea की वजह से होता है, वो इसलिए होता है because metabolism बढ़ता है, आपकी body cleanse होती है. Cleanse कैसे होती है? ऐसी होती है जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं या टॉक्सिन्स होते हैं आपकी बॉडी में, तो ये जो ग्रीन टी के कैटेकिन्स होते हैं वो उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स बहुत बढ़िया काम करना शुरू कर देते हैं. जो ऑलमोस्ट लाइक जैसे कार की सर्विसिंग होती है, वैसे आपकी बॉडी की सर्विसिंग हो जाती है इससे. बिकॉज ऑब्वियसली टॉक्सिन्स और कार्बन सारा बाहर निकलेगा तो बहुत एफिशिएंसी से बॉडी की मशीनरी काम कर पाएगी, तो आपका ऑटोमेटिकली बीएमआर बढ़ जाएगा, विच इज योर मेटाबॉलिज्म इज गोइंग टू राइज. And when you have a good metabolism, we all know that you will have an excellent weight loss. और सारे organs optimally काम करते हैं, खुल के काम करते हैं अपने maximum efficiency के साथ. So that is what green tea does to us. So this is just one of the functions, okay? So it's not a direct weight loss that the green tea is giving. It's just increasing or hiking your metabolism, जिसकी वजह से आपका weight loss होता है. तो obviously अब आपका fat का oxidation भी fast होगा. So that's how people lose weight when they have green tea. Okay. Besides this, green tea also releases nitric oxide. So nitric oxide की प्रॉपर्टी होती है कि वो वेजोडाइलेटर होता है, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करता है. सो नॉट जस्ट ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, वो हमारे जो रेस्पिरेटरी चैनल्स होते हैं तो उनको भी डायलेट करता है. तो सपोज व्हेन यू हैव कोल्ड एंड कॉफ, सो वी ऑल नो दैट म्यूकस गेट्स डिपॉजिटेड in your channels, respiratory channels. So that also gets cleared when you have a lot of catechins in whichever form. So you can have, so the limit of having green tea is only two. It's not like पूरे दिन green tea पीते रहें तो पूरे दिन cleanse होते रहेंगे. दो से ज्यादा एक दिन में नहीं पीनी होती है, and you barely have to dip it. So नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से आपको जो अगर हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स वगैरह, वो काफी हद तक, because obviously because you are broadening the lumen of your arteries, because of which the flow of the blood becomes easy, and blood is the carrier of oxygen and nutrients. So आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी बहुत आराम से आपके सेल्स में पहुंचेंगे, तो आप में एटीपी प्रोडक्शन या एनर्जी प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से आप बहुत एनर्जेटिक और बहुत वाइटैलिटी एंड स्टेमिना वाले फील करेंगे when you have green tea regularly, or even if it is 4 days in a week, it's okay. It's not that you have to take, because different fruits and vegetables will also give you catechins and different kind of antioxidants and phytochemicals. So उसके अलावा ग्रीन टी में जो कैटेकिन्स होते हैं, दे ऑल्सो मिमिक इंसुलिन. सो डेफिनेटली ये ग्लूकोज को भी, ग्लूकोज लेवल को भी कम करते हैं, बिकॉज दे मिमिक इंसुलिन. सो इवन इन टाइप 1 डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है ऑप्टिमली, सो उनमें भी ये वर्क करते हैं और आपको धीरे धीरे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों में ही हेल्प करेंगे. So that is what it is about green tea. And आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल और टोटल ट्राइग्लिसराइड को भी ये कंट्रोल करते हैं आपके ब्लड में. ठीक है, तो ये बहुत सारे फायदे होते हैं. अभी तो बहुत सारे ग्रीन टी के फायदे होते हैं, बट हमारा सेशन इतना लंबा नहीं होता है that I can talk only about one food, because I want to give the benefits of different kind of foods that we should be having on a daily basis. So this is about green tea. So your questions and all, there are so many questions that are coming about green tea, which I will answer once the session is over, so that it becomes easier for all. I can take all the questions towards the end about whatever we've spoken today, and anything else that you want to know about phytochemicals. Okay. अब हम दूसरा इंटरेस्टिंग फूड लेते हैं. लेट्स टेक ब्रोकली, विच इज अ क्रूसीफेरस वेजिटेबल. उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर फूड होती है. सो ब्रोकली एक विटामिन सी का रिच सोर्स है, लेकिन विटामिन सी तो न्यूट्रिटिव एंटीऑक्सीडेंट होता है ना, बिकॉज ये न्यूट्रिएंट होता है. सो अभी हम फाइटोकेमिकल की बात कर रहे हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर्स एंड फ्लेवर्स. सो ब्रोकली में इंडोल 3 कार्बिनल होता है, आइसोफ्लेवॉन्स होते हैं, ल्यूटिन होता है, जियाजांथिन होता है. इन सब की वजह से इम्यूनिटी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल गिरता है, और बाकी जो फायदे होते हैं, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसरस, स्पेशली इंडोल 3 कार्बिनल.
बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर फूड होता है, और ट्यूमर प्रोग्रेशन और ट्यूमर ग्रोथ वो दोनों को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ट्यूमर बढ़ता भी नहीं है और ट्यूमर की ग्रोथ आगे नहीं होती है, क्योंकि ये उन एंजाइम्स को ब्लॉक करता है जिनकी वजह से ट्यूमर की ग्रोथ होती है। सो ब्रोकली एक बहुत इंटरेस्टिंग फूड है, और ल्यूटीन और जियाजांथिन की वजह से आपके इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये भी एक फायदा है। सो आप पर ब्रोकली को अगेन उसका नॉर्मल फ्लेवर और कलर को आप रिटेन करने की कोशिश कीजिए। सो यू शुड नॉट बी कुकिंग इट टू मच, ओके। सो यू कैन जस्ट स्टीम इट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो भी मैं सब्जियां आपको बता रही हूँ जिनमें ये सब बेनिफिट्स होते हैं, so these vegetables are saturated with phytochemicals, but what we do is if we boil it, we have spoiled it, okay? Because there's so many things in it that can come into the water in which you have boiled it, and that water if we throw, then obviously we've lost so many beneficial properties of the vegetables. Okay, so broccoli also, you don't have to boil it. You can probably just saute it a little bit with the lid covered and keep it crunchy, retain the color and the flavor. Okay, so if you cook it too much, you might just end up losing both. और इसके अलावा जो, ओके लेट्स टॉक अबाउट गार्लिक, आई थिंक बिकॉज बहुत ही इंडियन वेजिटेबल है जो बहुत कॉमनली यूज होती है। हम सबको गार्लिक की चटनी पसंद आती है, हमको गार्लिक का फ्लेवर पसंद आता है, और अगर नहीं भी आता है तो हमको गार्लिक खाना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज गार्लिक में एलिसीन होता है। सो जो हिपोक्रेट्स थे जिनको फादर ऑफ द ग्रीक मेडिसिन बोलते थे, तो उनका गार्लिक फेवरेट ड्रग हुआ करता था सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए। And he would actually use garlic not just to cure like illnesses like pneumonia, bronchitis, and जो भी respiratory problem से related illnesses होती हैं, उनके लिए वो यूज करते थे, but primarily आज की तारीख में we use it a lot, I use it a lot for reversing cholesterol and triglyceride level and lowering the blood pressure, because allicin जो होता है is the flavor of the garlic again. सो जब अगर आपने गार्लिक को कुक कर दिया, लाइक जैसे हम नॉर्मली इन इंडिया वी डू द दाल का तड़का, और वी एड इट टू द ऑयल इन आवर पैन्स बिफोर वी फ्राई आवर वेजिटेबल्स, then we change the color and flavor both of the garlic. No, we make it brown in color. So it should not be brown in color. We have to be taking it the way it is. So the normal natural garlic, in whichever way we can take it. So we can take it in the form of the garlic chutney, और जो नॉर्मल ग्रीन चटनी होती है उसमें हम यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इट लाइक चॉप्ड गार्लिक विथ ऑलिव ऑयल एज अ गार्लिक ड्रेसिंग फॉर आवर चपाती रोल्स एंड काठी रोल्स। We can also use the green chili and a crushed garlic with sesame seeds as one of the type of chutneys that we can use. So more rawish form of garlic that we use, better it is for us if we really want to reverse cholesterol and a high triglyceride and optimize it. Because ये बहुत जल्दी असर करता है. In so many researches, it has been seen that अगर आप 2 garlic pods early in the morning लेते हैं, that is empty stomach, for a heart patient, it says that आपका almost 100 milligrams per deciliter cholesterol और triglyceride आपका एक महीने में कम हो जाता है. So it is that significant for us. But then it has to be taken natural. So the way to take it again, I want to explain, because you don't have to, that I've heard from people that they actually swallow the garlic. You don't have to swallow the garlic. It's not a pill, okay? So you have to crush it outside. When you crush it outside, it releases allicin, and then you have to put it in your mouth. So that is the right way of taking in garlic. And if you're a patient of cardiovascular disorder, like if you have heart diseases, ऐसे में आपको गार्लिक सुबह सुबह एज द फर्स्ट मील लेना पड़ेगा, बिकॉज तब वो उसका एब्जॉर्प्शन 100% पोटेंसी के साथ होगा, और आप बहुत जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स को रिवर्स होता हुआ देखेंगे। तो बाकी इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा नेजल कंजेशन, कोल्ड, कफ एंड फ्लू रहता है, उसमें भी गार्लिक रियली हेल्प्स वेल. So in that also we can take garlic as much as possible, but in again like in a chutney form or in a raw form, because it would really prove beneficial then. Okay, so now let's talk about the other important food that we've all been hearing of, especially in these COVID times, is काढ़ा, जिसको हम turmeric tea बोलते हैं. So turmeric means हल्दी, और हल्दी
टर्मरिक टी इज हल्दी वाली, मतलब हल्दी को कद्दूकस करके वी टेक द फ्रेश टर्मरिक फॉर इट। वी वुड नेवर रिकमेंड यू टू टेक द हल्दी का पाउडर जो होता है, बिकॉज अगर आप मार्केट से हल्दी का पाउडर खरीदते हैं तो दैट probably may have some adulterants in them. बट इफ you're using it for clinical यूज या किसी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए अगर हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हमको रॉ टर्मरिक को यूज करना चाहिए, जो जिंजर जैसी दिखती है, जैसे जिंजर राइजोम होता है वैसे ही ये हल्दी दिखती है। एंड इट इज ऑब्वियसली वेरी ऑरेंज फ्रॉम इनसाइड बिकॉज इट्स द रॉ टर्मरिक। So you have to just grate a bit of it. You can either infuse your water overnight and drink that water early in the morning, or you can boil the water and grate some turmeric into it and have it. Now, turmeric actually is becoming popular worldwide, और स्पेशली कोविड के टाइम पे, बिकॉज ये आपके इम्यून सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ाती है और आपकी बॉडी में से कोई भी पैथोजेंस, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई जो भी होता है ये उसको भी किल करती है। सो ये जनरली हमारी बीमार बॉडी को बहुत हेल्दी जोन में लेके आती है। सो ये टर्मरिक का बहुत बड़ा फायदा होता है। इसके अलावा ये एंटी कैंसरस फूड है और एजिंग को रिवर्स करती है। सो एजिंग की वजह से जो भी, मतलब सिर्फ विजिबल एजिंग की मैं बात नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू हैविंग फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स करना, वो तो हल्दी कर ही देगी। लेकिन beauty is always skin deep, you know, it always comes from within. As we say in nutrition, we always say that we cure everything from within. So अगर आपके बाल भी झड़ना, हम ऊपर से कुछ लगाने को तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अंदर से आपको देते हैं कि अंदर से अपनी बॉडी को आप ऐसा कर दीजिए कि आपके जो सेल्स हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स, बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अंदर जा रहे हैं हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, वो बहुत अच्छा आपके सेल्स को पूरा ऑक्सीजनेट कर दें और सारे टॉक्सिन्स को हटा दें। अपने आप आपके सेलुलर लेवल पे आपकी एंटी एजिंग शुरू हो जाएगी और बीमारियां दूर होने लग जाएंगी। So when I was talking about curcumin, so it really helps, you know, to remove the free radicals and toxins from each and every nerve in your brain. So your brain cells also get activated and they start anti-aging. And you will not get all those degenerative things like भूलने की बीमारी जो उम्र के साथ आती है, वो सब नहीं होगी। आपकी स्किन अच्छी दिखेगी। आपको जो बाकी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, बोन डीजेनरेशन होता है, वो सब नहीं होता है टर्मरिक लेने की वजह से। इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। वायरस अटैक्स वगैरह आपकी बॉडी बहुत आराम से न्यूट्रलाइज कर पाती है, उस वायरस और बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी टर्मरिक करती है। सो इसलिए रोज एक ग्लास अगर आप टर्मरिक का पानी लेते हैं, so it would really, we can call it turmeric tea. And abroad, outside India also, turmeric is becoming one of the favorite nutraceutical food. These days I see so many turmeric capsules coming in, whereas we are so fortunate to be living in a country जहाँ हमने बचपन से हल्दी खाया है, हमारी सब्जी में हल्दी डलती है। हमने हल्दी तरह तरह से खाई है। आई थिंक देयर सो मेनी पीपल हु मेक अचार और पिकल आउट ऑफ हल्दी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट ट्राई टू टेक इट इन अ नेचुरल फॉर्म। और जितना आप उसका फ्लेवर एंड कलर को इंटैक्ट रख पाएंगे, आप प्लीज उतना रखने की कोशिश कीजिए, तब वो बहुत अच्छा असर करेगा। सो आई थिंक इन्फ्यूज वाटर बहुत अच्छा तरीका होता है हल्दी लेने से। एंड अगेन आई ऑल्सो वांट टू रिमाइंड यू, आई थिंक मैंने बहुत पहले एक फेसबुक लाइव में बताया था आप लोगों को, जब पेंडेमिक चल रहा था, आई थिंक इट वाज इन द मंथ ऑफ अप्रैल और सो, that whenever you take turmeric, always ensure that you take 2 peppercorns in your glass. So peppercorns is काली मिर्च। सो काली मिर्च का जो पिपिन होता है वो टर्मरिक के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो इसलिए whenever you take turmeric tea or you take turmeric infused water, always ensure that you are also taking crushed peppercorn in that water or in that tea. तो आप देखेंगे कि उसका इफेक्ट मल्टीफोल्ड बढ़ जाता है। सो दिस इज अबाउट टर्मरिक। और टर्मरिक बहुत अमेजिंग है। अगेन ये उस ट्यूमर ग्रोथ को, कैंसर में मतलब ट्यूमर एंजाइम को ही किल कर देती है जो ट्यूमर ग्रोथ करते हैं। सो ये हम कैंसर पेशेंट्स को भी देते हैं, बिकॉज कैंसर भी एक तरह का डिजेनरेटिव मेडिकल प्रॉब्लम होता है जो फ्री रेडिकल के अटैक से होता है। सो फ्री रेडिकल आपके सेल की वॉल के अंदर घुस जाता है। फ्रॉम देयर इट ब्रेक्स थ्रू द न्यूक्लियस वॉल and then it changes the DNA of your cell. So the gene expression changes and that cell forgets how to divide by mitosis or normally. तो सेल डिवीजन का एक तरीका होता है हमारी बॉडी में।
सो एक सेल दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है, फिर वो सेल दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से हमारा सेल डिवीजन बॉडी में होता है। सो ये सारे सेल्स के न्यूक्लियस में ये मेमोरी स्टोर्ड होती है कि किस तरह से सेल डिवीजन करना है। लेकिन अगर वो वाला सेल अगर फ्री रेडिकल से अटैक हो जाता है तो फिर अब ऐसा नहीं होगा। अब वो सेल का न्यूक्लियस ये भूल जाता है दैट हाउ टू एक्चुअली डिवाइड नॉर्मली, and it starts dividing like a tumor, so which converts into malignancy because अब उस जीन को ये भी पता नहीं है कि इस ट्यूमर की ग्रोथ को रोकना कब है। नॉर्मली हमारे हेल्दी सेल्स को पता होता है कि किस एक्सटेंट तक ग्रो होना है, बट जो कैंसर सेल होता है उनको जो फ्री रेडिकल से अटैक होते हैं, सो दोज डीएनए हैज फॉरगॉटन, they have forgotten that how to like when to stop growing. So they continuously and constantly keep growing, even if they have to enter the nearby organ on and then elsewhere. Okay, this is what is called malignancy. So this is what happens. So haldi is also going to reverse that because it is neutralizing your free radical. तो free radical को ही हटा देती है। और अगर सेल बाय चांस हिट भी हो जाता है because of this, so haldi or curcumin present in the haldi can even reverse, can stop the enzyme that grows the tumor. So the tumor growth will not happen at all. So of course, the cancer will not become metastatic cancer or it will not spread into the nearby organs. So ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है curcumin का, and curcumin is a phytochemical. Then let me tell you about the next food, which is like an apple. So अभी बस एप्पल का सीजन शुरू हो गया है बिकॉज हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल मई में हो जाती है। उसके बाद अभी एप्पल्स बहुत अच्छे आने शुरू होंगे हिमालय से इंडिया में। हमारे इंडिजिनस एप्पल्स बहुत अच्छे होते हैं। So when these apples, so apples, we've always heard that an apple a day keeps the doctor away. So it does keep the doctor away. Okay, along with the other good foods, it's not that you're eating just an apple and you're going to keep the doctor away. So, along with the other foods, of course, when you have the healthy foods, you're going to keep the doctor away for sure because apples have got more than 9,000 phytonutrients. So, 9,000 is a huge number. We are not talking about one or two here. And the major most phytochemical which is present in the apple is quercetin. So, these days on different online shopping sites have got quercetin tablets, quercetin powders, quercetin supplements coming in various forms because people are chasing quercetin these days to reverse illnesses. Because quercetin सारी degenerative diseases को कम कर देता है, and it also again very strongly neutralizes the toxins in the body. So cleanses. It's called a very big cell scrubber. So you know the meaning of a scrubber. So it's called a cell scrubber. So quercetin हमको पिल से नहीं लेना चाहिए, हमको पाउडर से नहीं लेना चाहिए, हमको नेचुरल लेना चाहिए। अगर हम एक एप्पल भी रोज खाते हैं, so that will work its way to scrubbing our cells and cleansing our body from within. और quercetin एक बहुत बड़ा एंटी एजिंग होता है केमिकल. So it's very important for us to take it. Then it has polyphenols. पॉलीफिनॉल्स के अपने बहुत सारे फायदे होते हैं। पॉलीफिनॉल्स बहुत सारे फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल फ्रूट्स में पॉलीफिनॉल्स प्रेजेंट होते हैं। सो पॉलीफिनॉल्स का ये फायदा होता है कि ये हमारे गट माइक्रोबायोम को सिंथेसाइज करते हैं, एनहांस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और एक बहुत ऑप्टिमल एटमॉस्फेयर देते हैं, एनवायरनमेंट देते हैं गट माइक्रोबियोम को मल्टीप्लाई करने के लिए। और गट माइक्रोबायोटा या गट माइक्रोबियोम जो भी बोले, इट मीन्स द सेम, वी कैन ऑल्सो कॉल इट गट बैक्टीरिया colloquially. So these gut bacteria are amazing when you talk about its effect on immunity, its effect on aging, its effect on obesity reversal, and its effect on diabetes management and cardiovascular health. So gut bacteria को आजकल virtual organ बोलते हैं क्योंकि organ का function होता है, बट ये तो बैक्टीरिया होते हैं तो इनको रियल ऑर्गन तो बोल नहीं सकते। सो ये वर्चुअल ऑर्गन कहलाते हैं। सो और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बहुत सारे, हमारी ब्रेन हेल्थ डिपेंड करती है कि हमारे गट बैक्टीरिया कैसे हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, पॉलीफिनॉल्स विच आर प्रेजेंट, विच आर द फाइटोकेमिकल प्रेजेंट इन फ्रूट्स, they enhance your gut bacteria. As a result, automatically you're going to get so many different benefits that I've just mentioned. So that is the faida of having an apple a day.
Okay, and another phytochemical which is very strongly present is isocyanate. So you can also call it cyanidine. So cyanidine is also present in apple. So that is also going to increase, our immunity, and it will also reverse your cardiovascular problems like triglycerides, cholesterol, blood pressure. It will also help in synthesizing immune cells and gives you multiple other benefits. So hence they say that, an apple a day keeps the doctor away. So, but then you also have to be, everything works when, you are also doing your lifestyle is also good. So if you're just eating an apple and if you're smoking like 10 cigarettes in a day, then it may not give you that kind of a benefit. So overall, your lifestyle has to be good by and large, at least 5 days in a week, if not every day, because expecting you to, live like a saint for 7 days in a week would be actually so unreal. So once in a while you can have your own like binge and whatever you want to have, but by and large try to, like 5 days in a week, try to stick to having good fruits and vegetables in the natural form and closest possible form with the vegetables also. So hence we always say that do not overcook your vegetables so much, but we're losing a lot of it. So even brinjals for that matter are purple in color. So the purple or bluish color in the brinjal, okay, that is called anthocyanin. So that will also work its way in cleansing our bodies and anti-aging effect. Okay, so of course, like brinjal में बहुत सारे benefits होते हैं. It has vitamins, it has minerals. But here we are not talking about the nutrient part of the fruits and vegetables. We're just talking about the color. So more different color you take, better is going to be the effect. So now we have come to an age, there's a term that we normally use, food synergy. So food synergy यही होता है that synergize the way you eat your food, in the sense that you can, of course, take your food. You are taking your food for the nutrient part of it, because obviously it's going to have carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, which are the nutrients. But we are combining and, multiplying the impact of those nutrients with the effect of the phytochemicals, which are just the colors and flavors. They are not even nutrients. So now 2 plus 2 is not becoming 4, 2 and 2 is becoming 22. So we are actually multiplying the effect like that. So hence taking the fruits and vegetables becomes so, so important today because of the kind of world we live in and the kind of toxins we accumulate in our body all the time. So every day is a way to cleanse your body. You don't have to wait for that one day in a week when you're having a nice fruit juice or something. Okay. So when we talk about fruit juices, again, it has to be natural. It doesn't have to be the Tetra Pak or the packaged ones. Okay. The natural fruit juices will have the natural color and the flavor. So they are going to be impactful. But rather than having fruit juices, I always advise you all to eat your fruit and not to drink your fruit. Fruit should never be drank. Fruit should be eaten because we want the fiber part of it also. Because the fiber also goes in your gut and kind of multiplies your gut microbiome or your gut bacteria, जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं. So ये बहुत सारे foods हैं. इनके अलावा let me talk a little bit about soya bean. So soya bean has got that typical flavor, and the phytonutrient present in soya bean is phytoestrogen. So estrogen is a female hormone. So there are medical problems in our body जब हमारा estrogen थोड़ा कम हो जाता है, like in case of menopause. So during menopause, the estrogen level actually kind of slightly dips down, because of which लोग HRT लेते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब उनको शॉट्स लगते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के. तो ऐसे में अगर आप सोयाबीन हफ्ते में 3 दिन भी खाएंगे इन इट्स नेचुरल फॉर्म, तो आप देखेंगे कि उससे हमको नेचुरल ईस्ट्रोजन मिल जाता है. So it's an estrogen like chemical. That's why we call it phytoestrogen. So phyto means plant. So in Greek it is called, like phyto is called plant. So plant estrogen है वो, तो वो लेना बहुत आराम, मतलब it's better, right? Because it's not any chemical, it's not given to us through a shot or a drug or a pill or anything. Natural form है. और सोयाबीन के इसके अलावा बहुत सारे फायदे होते हैं. Like it contains सारा saturated fatty acids, PUFA, MUFA, सब कुछ सोयाबीन में होता है. Soybean is the only, legume or food in the world which contains 40% protein, जो unimaginable levels of high protein होता है. तो साथ साथ प्रोटीन भी मिल रहा है हमको और फाइटो एस्ट्रोजन भी मिल रहा है. तो अगर आप मेनोपॉजल
पीरियड में है, मेनोपॉज का बहुत लंबा दौर होता है, इट लास्ट फॉर अबाउट 5 to 8 years. So at that point of time, if you're taking in good amount of soya bean, you also see that you don't get all those hot flashes and depression and like the problems that normally people get. So वो भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है. And during PCOS also, PCOS के टाइम भी जब PCOS प्रॉब्लम होती है, even in young girls these days, so उस टाइम भी ईस्ट्रोजन लेवल एक्चुअली कम हो जाता है. PCOS में बहुत एक्सेंचुएट होता है ईस्ट्रोजन का प्रॉब्लम. तो उस टाइम भी you can actually take in soya bean. Phytoestrogen is really going to work well. So in both these cases, and when you have menstrual disorders, again soya bean is going to work well. So phytoestrogen is a phytochemical which is present in soya bean. So that also actually becomes very important. So ऐसे हम बहुत सारे फूड, जिंजर के बारे में हम बात कर सकते हैं. So ginger is amazing when it, again, this was one of its Hippocrates' favorite food, which he used as a drug, like a medicine. So Hippocrates always said that let food be thy medicine and medicine be thy food. वो इसीलिए बोलते थे बिकॉज उनकी जो सारी ड्रग्स थी, जितनी भी ग्रीक मेडिसिन थी, यूनानी दवाइयां बोलते हैं उसको हिंदी में, so they were all based, or they were all prepared from the basic foods. So from the normal fruits and vegetables and कभी कभी pulses and herbs and spices उनको use करके. So उस तरह से ginger, so the phytochemical which is present in ginger is called gingerol. And gingerol is again amazing when you talk about, like, gingerol एक बहुत strong painkiller भी होता है. अगर बहुत डिप्रेसिव या जिन लोगों को बहुत ज्यादा सिर दर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए भी जिंजर ऑयल बहुत अच्छा वर्क करता है. सो हाउ टू टेक जिंजर, अगेन यू हैव टू टेक इट इन देयर नेचुरल प्लेन फॉर्म एज मच एज पॉसिबल. लाइक आप जिंजर एल के फॉर्म में आप ले सकते हैं, आप जिंजर का पिकल बना सकते हैं, आप नॉर्मल जिंजर को हर मील के साथ यू कैन यूज इट लाइक अ what do you say, like a pickle. You can grate some ginger और उसके ऊपर आप lemon juice डाल के और थोड़ा सा salt डाल के you can use it like a pickle and have it fresh with every meal. So हर meal के पहले जब आप खाना खाने बैठते हैं, so you can grate some ginger, you can add some lemon juice to it and little bit of salt, और आप उसको पिकल की तरह खाइए बिकॉज वो सबसे नेचुरल फॉर्म ऑफ जिंजर है, और वो भी विटामिन सी के साथ आप लेमन जूस के साथ ले रहे हैं. सो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है. और माइग्रेन और किसी भी तरह का सेरिब्रल पेन अगर आपको बहुत ज्यादा होता है, तो वो जिंजरॉल की वजह से काफी हद तक धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो. एंड इसके अलावा इट इज वेरी वेरी गुड फॉर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ऑल्सो. जिन लोगों को बहुत ज्यादा एसिडिटी, ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग, इन सब की प्रॉब्लम होती है, जीआई डिसऑर्डर्स में इनडाइजेशन जैसा लगता है, कोलोन में प्रॉब्लम होती है, बहुत गैस बनती है, फ्लैचुलेंस बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों को भी हम जिंजर से क्योर कर सकते हैं. सो जिंजर यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन यूज इट इन योर दाल एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट, बट जितना आप नेचुरल फॉर्म में लेंगे उतना अच्छा होता है. तो जिस तरह से हमने बताया वैसे ले सकते हैं. पिकल भी बनता है जिंजर का, आई थिंक लेमन जूस में जिंजर के फ्लेक्स डाल के उसको मैरिनेट करते हैं एंड देन दैट्स हाउ इट्स टेकन. सो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिंजर कंज्यूम करने का. लेकिन जिंजर का फ्लेवर कम्स गुड इन pulses and vegetables also because it's so sharp and we want that flavor. Gingerol is that flavor of that ginger. So it's not just the nutrients here of the ginger that we want. So yes, that is how you can consume ginger, and it's absolutely wonderful. So okay, so next food I think I can talk about is the phytochemical which is present in red wine and peanuts. So that pink color or that purplish color of peanuts and red wine, which is anthocyanin plus resveratrol. So resveratrol एक बहुत strong phytochemical होता है जो आपकी बॉडी को क्लेंस करता है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है, और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को ऑप्टिमाइज करता है. सो ये बहुत सारे फायदे, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी होती है, और जो आपके फैटी स्ट्रीक्स डिपॉजिटेड है इन योर आर्टरीज और ब्लड वेसल्स, ये उनको भी कम करता है. सो इसीलिए इट इज सेड, बट इफ यू डोंट ड्रिंक वाइन और अल्कोहल, तो अब हार्ट पेशेंट है तो ऐसा नहीं है, आई एम नॉट, आई मीन लाइक रिकमेंडिंग यू टू ड्रिंक वाइन इफ यू डोंट टेक अल्कोहल, बट पीपल हु ड्रिंक अल्कोहल, फॉर देम 120 ml of wine over the weekend, say Saturday and Sunday, would really work well.
especially if you are a BP patient और if you're a high cholesterol or a high triglyceride या फिर अगर आपके blockages हैं तो ये बहुत हेल्प करता है। और ऐसे में पीनट्स भी हेल्प करते हैं। लोगों को बहुत ज्यादा आजकल लाइक मिसकंसेप्शन है दैट पीनट्स में और कैश्यू नट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है। दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल दैट वी शुड नॉट हैव पीनट्स, वी शुड नॉट हैव कैश्यू नट्स बिकॉज इट हैज कोलेस्ट्रॉल। तो ये बात आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो दोनों चीजें मैंने बताई है, कैश्यू नट्स और पीनट्स, ये दोनों ही आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होती हैं और इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, जीरो होता है। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल सोर्सेज में होता है। किसी भी प्लांट सोर्स में, वेजिटेरियन सोर्स में कोलेस्ट्रॉल इज जीरो। ओके, सो ये बात एक तो अपने दिमाग से हमको निकालनी होगी बिकॉज ये बहुत ज्यादा बिलीफ लोगों के मन में है कि लोग काजू नहीं खाते हैं, पीनट्स नहीं खाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट इनमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बोलते हैं फाइटोएस्टेरॉल। तो वो कोलेस्ट्रॉल का ऑपोजिट काम करता है। इनफैक्ट अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जमा हुआ है और आप हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट हैं तो फाइटोएस्टेरॉल आपके उस कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ये एक्चुअली रिवर्स है। लेकिन इन दोनों में ऑफ कोर्स लाइक कैलोरीज हम बहुत ज्यादा आपको नहीं देना चाहते हैं, so you have to limit the amount. So when we give you cashew nuts या काजू जो होता है, we will not give you more than 5 to 7 cashew nuts in one day, and that's about it. Peanuts when we give to you, try to take it not in a fried form because अगर fried form में लेंगे तो आपका fat का intake बढ़ जाएगा। So try to take it the roasted और सिंगदाना के फॉर्म में आप पीनट्स ले सकते हैं। बहुत अमेजिंग फूड होता है और उसका जो फाइटोएस्ट्रॉल है वो अच्छा काम करेगा। वो आपका एचडीएल बढ़ाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, और एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को वो कम करेगा। लेकिन अगर स्नैक के तौर पे ले रहे हैं तो आई थिंक 20 ग्राम्स ऑफ पीनट्स आपके लिए बहुत होने चाहिए बिकॉज ये ऑब्वियसली मिड मील स्नैक के फॉर्म में ही होगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स। और पीनट्स में और वाइन में बहुत अच्छी क्वांटिटी में रेस्वेट्रॉल फाइटोकेमिकल होता है विच काइंड ऑफ रियली हेल्प्स यू। Then I think next food I would love to talk to you about is beta carotene, जो बहुत ज्यादा fruits and vegetables में होता है, which is present in all the fruits and vegetables which are green, red, yellow and orange. तो जो सब्जी और जो fruits are green, red, yellow and orange, they would be having carotenoids in them in the form of beta carotene. And it is an amazing phytonutrient or phytochemical that goes inside and actually cleanses your body. It also increases your HDL levels, that is your good cholesterol, और इम्यूनिटी लेवल आपका ये बढ़ाता है और ब्लड को क्लेंस करता है और डीजेनरेटिव प्रॉब्लम से आपको दूर रखता है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द आई विजन, आपकी जो आई विजन होता है, रेटिना एंड कोन्स को हेल्प करता है और आपका विजन गेट्स बेटर एंड बेटर व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ कैरोटिनॉइड्स बिकॉज इट इज एक्चुअली अ रियली अमेजिंग। एंड आई थिंक बहुत सारी सब्जियां होती है, वी से pumpkin is yellow in color, green are all the green leafy vegetables, okay, so they are also very very significant. So anything which is red, like any red fruit, it would also have carotenoids in them. So it is green, red, yellow and orange. So even the orange fruit and all the fruits which are orange in color, so they have a lot of carotenoids in them, including mango would have a lot of carotenoids in them. So please consume them on a daily basis. Try to saturate your diet or bulk your diet up with fruits and vegetables. Then let's talk about the lycopene in the tomatoes. So lycopene is present in tomatoes, in anything which is red. And that's like one food in which the lycopene get enhanced when you cook them, because we always have seen that टोमेटो का जो रेड कलर है वो कुकिंग के टाइम और ज्यादा बढ़ जाता है। सो जब आप लाइकोपीन रेड गुआवा में भी होता है जो अंदर से रेड होते हैं। सो इनको बहुत अच्छी क्वांटिटी में आप टमेटोज आप कुक करके अपनी सब्जी में, अपनी दाल में यूज कर सकते हैं। आप टमेटो जूस पी सकते हैं, आप टमेटो सैलेड के फॉर्म में खा सकते हैं, but it has to be natural. You don't have to take the tomato juice from the Tetra packs, please, because then it would not have that lycopene. And lycopene is amazing when it comes to the beneficial properties. Again, this is amazing when it comes to CBD and also in reversing your glucose tolerance, like उसको भी ये enhance करता है.
So ये बहुत सारे, I mean, like I can actually, as I told you, this is my favorite topic and I can go on and on talking about this. So बहुत सारी बीमारियां हैं जो सिर्फ फाइटोकेमिकल्स लेने से ठीक होती है. So when I had my personally, when I had COVID, I think I actually was totally based out of these phytonutrients, and I was only on fruits and vegetables for a couple of days. And I was back to normal on my fourth day. Did not have any grave symptom that people have, and and started my workouts on the seventh day after the COVID detection. So COVID fever detection, of course, happened later. After the COVID fever, 7 day I was back on toes. It was only because, the all the while that the COVID was there in the body, the phytochemical intake through fresh fruits and vegetables was very, very high. And of course, combined with hydration of 7 liters is what we are supposed to take when people suffer from COVID, because COVID virus is very dehydrating. Okay. So combined with that, it was so easy to come out of that, the impact of that virus, so that is how it can affect us. So that is what wanted to tell you all about. So let me just take a few question and answers. Okay, so first question is that best time to drink what? It's like, okay, best time to to drink green tea. So green tea can be had any time when you're fairly empty stomach. जब भी हम कोई भी food phytochemical effect के लिए लेते हैं तो हमारा पेट खाली होना चाहिए. So when we empty stomach generally is the time in the morning, okay, as when we just wake up after we've just had our first glass of water early in the morning. After that is your stomach is empty. So if you're taking in a fresh fruit or something, the best time to take it is that point of time, because then absorption is going to be 100% and it will not be hindered by the presence of the other foods. Okay. So best time would be a little after you wake up, after you've had your first glass of water, plain water or whatever infused water. So that, and अगर second time जो green tea का या जो भी आपको fresh fruit खाना है वो होता है mid morning time around 12 o'clock in the afternoon, because that is the time जब हमारा पेट खाली होता है, तो हमारा एब्जॉर्प्शन सिर्फ उस फ्रूट का होगा तो बहुत अच्छे से होगा. इट विल नॉट बी हिंडर्ड. और उसके अलावा इवनिंग टाइम अराउंड बिटवीन 5 to 6:30 इज द टाइम व्हेन एक्चुअली you can take in anything, whether it is green tea or any food that you're taking in for the phytochemical effect of it. So that is how you can take it. That way the absorption is going to be the highest. I hope that answered your question. Okay. So, can we have prebiotic green coffee? तो green coffee नहीं लीजिए. I mean, we would not advise you to take caffeine in any form. Whether it is green coffee जिसमें caffeine बहुत कम होता है, और but then ना ही लीजिए तो better है किसी भी form में. अगर आपको normally caffeine पीने की आदत है, वो आपके चाय में भी जा रहा है, because tea also has caffeine in it, and your coffee also has caffeine in it. Green coffee would have caffeine in it. So we don't use them as phytochemical effect. It will not give you any results. So prebiotic or probiotic, you don't have to take anything which is synthetic. You have to take things which are natural. So you can take buttermilk, you can take in some curd that has the prebiotic effect, and you can take in fibrous fruits and vegetables. When you take in fiber, that is the best prebiotic that you can have. Have bananas, they top the list of the prebiotics, followed by citrus fruits. So please have those. Onion and garlic is number 3 in the prebiotic effect. So take those. These are going to go and make your gut microbiome. और फिर आप देखना कि your health starts getting better and better. Okay, so which green tea will you recommend? So I don't recommend any green tea. I will not talk about brands here. So, but you can take any green tea that you feel which does not make your tea color very dark. Okay, that is what I can say, because जो ग्रीन टी होती है उसका कलर पेल ग्रीन ही रहता है. अगर वो डार्क ब्राउन कर रही है इसका मतलब है कि वो नॉर्मल ग्रीन टी नहीं है, उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं है. Okay, so how long one should soak green tea? I think I'd answered that question while I was taking that. So you barely have to soak it so that you can just turn that water off white. So ubalte hue pani mein, like you've just taken that water in your cup, and in that you can dip for only for a while. If you're using the tea leaves, then you boil that water, switch off the gas, and then you add like your tea leaves and quickly strain it. Don't let it get soaked for a very long time. Okay. So can we take raw turmeric in summer? Yes, yes, you can. You can take it just a glass, that you have to be taking.
So one glass is not going to, turmeric is very important for us. So yes, you can take it in summer. That's the answer. But just don't overdo it, okay? So don't add too much of it thinking कि बहुत ज़्यादा असर हो जाएगा. Just one glass, which is like barely like yellow in color, with one tiny piece of turmeric is more than enough to be had per day. So, okay, how to make turmeric powder at home? सो जो ड्राई टर्मरिक आती है, जो सूखी भी हल्दी आती है, वो लम्प्स के फॉर्म में होती है, विच यू कैन वेरी इजीली गेट इन द शॉप्स इन द ग्रोसरी स्टोर्स. सो यू कैन गेट दैट एंड आप उसको फ्लामिल से पिसवा सकते हो फ्रेश, और मिक्सी में तो वो टूट जाएगी, सो वो तो हो नहीं पाएगा. सो टर्मरिक पाउडर आप अपने सामने, यू कैन गेट इट डन फ्रॉम योर फ्लामिल एंड यू कैन गेट इट. ओके, वो फ्रेश आ जाती है. Okay, so how much of fruits and vegetables in a day is the next question. So take at least about 2 to 3 fruits, like we say 400 grams of fruits in a day, and in every meal, try to consume vegetables for breakfast, like if you're taking poha or upma or uttapam or paratha. So try to add vegetables into that. So uttapam can be made with a lot of vegetables that you can grate on the top, right? I mean, like capsicum and beans and carrot and onion and tomatoes. All that can be added on your uttapam. Then, if you're making idli, you can again in your idli batter, you can add lots of vegetables, or you can have your idli with the vegetable, okay, with the vegetable curry or with a dry vegetable. Then we talk about paratha. So you can make aloo pyaz ka paratha or something like the cauliflower paratha or whatever it is. You can mix the vegetables and have, or you can have your paratha and vegetable. If you're making a poha, add lots of vegetables to it. Okay, like onion and beans and capsicum and tomatoes and peas. So all that will give the phytochemical effect to your poha. And upma also can be made likewise. And try to add less cereal and more vegetables. So that way the fiber will also increase and you will get a good polyphenol activity in your gut bacteria also. They are going to multiply multifold. Okay. So how to use soya? So soya bean, that is, it is one of the kidney beans. So soya beans are like rajma, but they are like off-white in color. So you have to soak it overnight and then you can boil it in the morning and you can make salads out of it, or you can make a curry out of it and have it with your chapatis or rice. You can, in whichever form, like I'm sure that you can make a steak out of it, like a tikki or something. So whichever way you want to use, you can. सोयाबीन का आटा आप रोटी बनाने के लिए यूज कर सकते हो. सोयाबीन का आटा you can add to your wheat flour and make roll rotis out of it or make chapatis out of it. So different ways you can actually use soyabean as. It can also be used as tofu. Tofu is the paneer of soyabean. आप वैसे भी ले सकते हैं, आप सोया मिल्क पी सकते हैं. तो ये सारे फायदे होते हैं सोयाबीन, and this is how you can actually use soyabean. Okay, it is like, can we boil haldi plus ginger in a drink? Yes, you can. It becomes like a kada. And that's what we call kada, right? I mean, the water that we use generally to build an immunity. इसी में तुलसी भी आप डाल सकते हो और peppercorns भी डाल सकते हो. As I told you, turmeric water and turmeric tea not to be taken without peppercorns और काली मिर्च. उसके साथ में आप लेंगे तो उसका बहुत ज्यादा, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, उसका इफेक्ट बढ़ जाता है, सिमुलेशन भी बढ़ जाता है. सो ट्राई टू टेक इट विद दैट. सो एड योर टर्मरिक, एड जिंजर एंड ऑल्सो एड पेपरकॉर्न्स. इफ यू वांट थोड़ी सी तुलसी लीव्स ऑल्सो यू कैन एड, देन दैट बिकम्स लाइक अ काढ़ा. ओके. So, okay, giving diets on this platform, guys, is going to be slightly difficult. How to give diets? So, tuberculosis के लिए जो होता है, so like I just want to good. I mean, it's an excellent question of whosoever has asked in a way, because there was one point I would actually love to address here. So there was a person called scientist called Gerson. So Gerson therapy बहुत सालों से use हो रही है to cure tuberculosis. एंड गर्सन डाइट क्या होती थी? इट वॉज टोटली प्लांट बेस्ड डाइट, जिसमें ही गेव लाइक 13 ग्लासेस ऑफ fresh vegetable or a fruit juice. Okay, like 13 glasses, which is like pretty many. And उसके अलावा स्नैक में वो सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स यूज करते थे, and high fiber, like whole grain cereal with sabzi as the other two meals. So इसको गर्सन थेरेपी बोलते थे, which actually Gerson had
recommended for the tuberculosis patients only, this kind of a diet. So eventually it was, yeah, used for the pulmonary tuberculosis primarily. And after that, this diet started being used for cancer. So Gerson therapy is now used for cancer because in cancer also, we normally want to give a lot of phytochemicals so that the tumor progression doesn't happen and the problem gets reversed. So this is how it works. So probably, I hope it answers your TB वाला question जिन्होंने भी पूछा था, because ये Gerson therapy आप use कर सकते हैं. A lot of fruits and vegetables, totally vegetarian diet, उसमें animal product कुछ भी नहीं होता. एंड पहले जब गर्सन ने ये वाली डाइट रिकमेंड किया था, तो वो करीब 100 ग्राम्स ऑफ लिवर देते थे, बिकॉज दैट लिवर इज वेरी रिच इन विटामिन B12, बिकॉज इट वाज सेड दैट B12 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवर्स ऑल दैट. लेकिन फिर उसके बाद गर्सन थोड़े आई मीन ही वाज एट अ टाइम a little older, when the medical science and researches were not done to that extent. Then later it was found out that vitamin B12 gets synthesized in your gut bacteria only. I mean, your bacteria is the factory of manufacturing your vitamin B12. उसके बाद लिवर देना बंद कर दिया था, बिकॉज वो ऑलरेडी आपके गट बैक्टीरियाज तो करते ही हैं फाइबर फूड से, और गर्सन डाइट में फाइबर बहुत ज्यादा होता है और सब कुछ वेजिटेरियन होता है, एंड ऑफ कोर्स लाइक इट हैज a lot of fruits and vegetables. That's what it was. So yeah, that's what we use for TB as well. So thank you for asking this question so that I could share with you about the Gerson therapy and about the diet. So that's about it. So we are done. I think you answered all the question and answers, and I hope you've really kind of benefited from the session. Again, please share this video with lots of others, because we come across so many people who are suffering from so many, diseases and illnesses. So just with an intention of reversing the, illnesses and letting people know that how easy it is to reverse comorbidities from their lives and to reverse the blood pressure. Please share this, Facebook Live with anyone who know on your Facebook groups or wherever you want to share, so that it can reach to maximum number of people. So, thank you so much. And I think it's time all of us also kind of just retrospect and, introspect and go back to seeing that what kind of diet that we have. So, and kind of just reverse it to make it amicable. So, stay fit, stay healthy. Lots of love. Thank you on behalf of VLCC Institute. And see you next Friday, 12 noon, with some very interesting topic. Bye for now.